Hi guys, this video is for the OBC student. OBC students have got one problem in hand is that cutoffs are really very high. Open se kam hai obviously, but as compared to SC, ST, OBC cutoffs are really very high. So today we look at all the exams I can take as an OBC student. So this video is purely for the OBC point of view. SC, ST will have the same rules, exactly same rules. So SC, ST can also watch the same video. So number one colleges which you have to give is the CAT exam. But on the other hand, I can avoid some exam like NMAT. NMAT, all the seats which are there in NMAT are for all for open category student. There is no reservation at all in the NMAT exam. तो जब रिजर्वेशन है ही नहीं तो मैं पैसा वेस्ट क्यों करूँ? सी अनलेस तुम्हारा दिल बोलता है कि नहीं मुझे तो नार्सिंग मौजी जाना ही जाना है तो जाओ. बट माई पॉइंट इज इफ इट इज़ नॉट वैलिड, इफ माई कार्ड इज़ नॉट वैलिड, वाई आई शुड अप्लाई देयर. आपके सामने 4 मॉल है, चारों मॉल में सेम प्लेसमेंट मिलने वाला है, तो जिस मॉल में हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं चलता फॉर एग्जांपल, वो मॉल में जाके क्या फ़ायदा. ठीक है, यहाँ तो 3 मॉल में है ही नहीं, बात ही नहीं हो रही. 3 मॉल में सेम प्लेसमेंट, सब कुछ सेम है. ठीक है, सो नार्सिमोलॉजी आई कैन अवॉइड, इट्स टोटली योर विश. ज़ैट आई कैन अवॉइड बिकॉज ज़ैट ऑल ओपन सीट्स आर देयर, नो रिजर्वेशन एट ऑल, so then why to play. And same way we can apply for, we can leave the SNAP exam also, because SNAP also all the seats are for the open category SC ST. there is no OBC seat in the SNAP exam. ठीक है, तो ये 3 एग्जाम we can totally avoid, SNAP, NMAT and ZAT. What exam to give now? Number 1 is CAT exam. Yeah, 25% seats are for OBC. If suppose IIMs have total 4,000 plus seat, almost 5,000 seats, 4,000 लेके चलो, 4,000 का 1,000 seats are there for OBC, 1,000 सीटें. दो टारगेटिंग CET, मास्टर CET, OBC वालों के लिए नंबर ऑफ सीट्स आर 17 या 18. यहाँ पे 1,000. ठीक है, तो इफ यू आर फ्रॉम OBC कैटेगरी, योर कॉम्पिटिशन फॉर CET इज रियली वेरी हाई. इनफैक्ट सारे एग्जाम, IFT you can give, TIS Tata Institute Social Science you can give, CMAT for NIA NIBM 2 colleges, इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है OBC का, I can give. Okay, so all the government exam I can give. So CAT number 1, number 2 Master CET if you are based in Maharashtra. अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में हो, 10 CET में आपका मास्टर CET में आपको ओपन में काउंट होगा, OBC में काउंट नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा. मास्टर वालों के लिए OBC फ़ायदा है. ओके, नेक्स्ट टेस्ट टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, ऑल रिजर्वेशन इज देयर. IFT वेरी गुड एग्जाम, रिजर्वेशन इज देयर. सो ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन है. नाउ प्रॉब्लम इज ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस का नंबर ऑफ सीट्स कंबाइंड इज स्टिल लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स इन द IIMs टुगेदर. तो इसके आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पहला फोकस, मेन फोकस शुड बी ऑन द कैट एग्जाम, बिकॉज अगर आपने कैट क्लियर कर लिया तो वी विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड द कट वे आल्सो लो. कैट में यू नीड 92 परसेंटाइल ओवरऑल. या ओवरऑल इफ यू कैन गेट 92 परसेंटाइल, यू गेट ऑल द मेन IIM कॉल्स. 92% मतलब अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 65 to 70 मार्क्स. 70 नंबर ला दो 200 में से, 30% मार्क्स यू आर गोइंग टू IIMs, मेन IIMs. अगर आपको न्यू IIM बेबी IIM भी चलेगा तो 80 परसेंटाइल पार कर दो. ठीक है, 80% आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स, विच इज़ 200 में 60 नंबर, सॉरी 30%, 200 में 60 नंबर 30%, एंड 70 मार्क्स अराउंड 35 मार्क्स अगर आप ला सकते हो 100 में से, यू आर गोइंग टू मेन IIMs. ओके, सो यू फाइनलाइज एग्जाम यू टेक. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि NMAT 2 ही मत या ZAT 2 ही मत, तुम्हें XLR ही जाना है. सर XLR मेरे घर के सामने, मैं तो वहीं जाऊँ, तो जाना मेरी जान, मैंने कब मना किया. But the colleges where you have reservation, why to avoid them? So please list all the colleges if I missed any in the comment box, so that we can again share with each other what all colleges we can target. All the best.